Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Everything seems to be good, right? Until like now, no. Everything looks fine. I'm properly audible and properly visible, right? Until like okay. Hi, Rishparnavche. Right. Hello, everyone. So, very good morning, and almost we are at the end of AI Impact Summit. काफी काफी ज्यादा काफी मिसमैनेजमेंट काफी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज काफी सारी चीजें जो है वो चल रही हैं पिछले एक लाइक 4-5 डेज से राइट हाँ मतलब द थिंग इज अगर ओवरऑल फैशन में मैं देखूं और चेक करने की कोशिश करूं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज तो मेजोरिटी ऑफ टाइम देयर वर टू थिंग जो कि न्यूज में तुमको देखती है दैट इज एआई इम्पैक्ट समिट राइट एंड द सेकंड वन इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी. I'm not sure why and how this happened, but this actually happened, and that happened wrong. Yes, I mean, they bought a robot from Chinese website. They get it into AI Summit, and they said this is like developed from the scratch in the university. They have invested 350 crores in the AI block itself, and then they show some drone. Football, soccer drone, and that was also being bought by some particular website. Then they had like कि कुछ clear है कुछ नहीं है. Next day they got a plane that was in news जो thermocol का बना था and that thermocol plane was bounded with a rubber elastic like बहुत सारी चीजें and the same dog video dog related जो वीडियो था that was tweeted by the IT minister Ashwini Vaishnav उसमें कम्युनिटी नोट आ गया फिर उनको हटाना पड़ा this was like huge embarrassment that people even didn't checked about their what we can say origin the background and some other thing because we are talking about AI impact summit है ना और AI का मतलब ये है कि हमें सब पता होना चाहिए टेक्निकली but this wasn't the case in this particular thing then there was some other aspects जो उस टाइम पे आए तो एआई इम्पैक्ट समिट आया तलगोटिया यूनिवर्सिटी आया फिर एआई इम्पैक्ट समिट में ही देयर इज अनदर न्यूज़ दैट वाज relevant to Bill Gates. Yes, people were talking whether Bill Gates is going to appear in the summit or not. The way he had names and Epstein files and the way photographs and documents is being released of him. So it was like going on and off whether he's going to attend or not, whether he's going to provide the keynote address or not, something like this. So ultimately, it was like, he's not going to be present in this particular summit that actually started questioning the Hardeep Singh Puri matter. Congress has like after new file released, कांग्रेस ने प्रॉपर कुछ 14 मीटिंग्स जो हैं उनको जस्टिफाई किया कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में हैं एंड ऐसा ऐसा ये सारी चीज तो the thing that Epstein file thing is getting really what we can say into the market very badly. I mean, जो Duke of York है, and Prince Andrew, he was arrested, later released by the public misconduct, and tons of different things. So Epstein file was in news. फिर भाई साहब एक नया SIR प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज कर दिया है. They said कि we are going to conduct in 22 states and union territories the new SIR process. सो ये भी एक नई चीज आई लाइक ऑपोजिशन पार्टीज आर अगेन ऑन दी एज कि भाई लो और ज्यादा माहौल जो है वो चलना शुरू हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट yesterday talks about the freebies and this debate is regular after the Bihar election. Now this time it's not like what we can say legal what we can say aspect of freebies whether that is allowed with the constitution or not. So इस टाइम उन्होंने फिर से बोला कि भैया
This doesn't look like a welfare. This more over look like the appeasement of the voters during the polls. क्योंकि ऐसी सारी स्कीम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं पोल्स के पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज के बारे में भी डिबेट जो है वापस शुरू की। फिर जो एआई का पॉलिसी विजन है, मोदी जी ने कल एड्रेस में मानव करके एक पर्टिकुलर बात बोली। राइट। सो मानव को एआई जो पॉलिसी है इंडिया के विजन में, एआई विजन जो है इंडिया का, उससे एसोसिएट किया कि ऐसे ऐसे चीजें हम करने वाले हैं और ये सारी चीजें बनेंगी। सो मानव करके एक पर्टिकुलर चीज जो है वो भी वो की। Epstein files we told you about बिल गेट्स का विड्रॉल हो या फॉर्मर ड्यूक ऑफ यॉर्क हो, ड्यूक एंड ड्यूक, या जो ब्रिटेन में जो फ्रांस में अरेस्ट हो रहे हैं, दीज आर सम पर्टिकुलर थिंग जो कंटिन्यू है। देन असम में इलेक्शन होने वाला है एंड असम पॉलिटिक्स इज गेटिंग लाइक हॉटर एंड हॉटर एवरी डे। सीएम असम के जो सीएम है हिमंता बिश्वा शर्मा ही अगेन स्पार्क डेमोग्राफिक डिबेट। They said कि even after winning the election, right, the Assamese are going to be in minority in the Assam by 2026, 2027 census. So it's like कुछ भी हो रहा है एंड कुछ भी सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, बट हाँ, जो इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है वो एक डिफरेंट फॉर्म में। Then again a new movie is that coming, that is Kerala Story 2. Remember Kerala Story 1? I saw the film and film from being my side was completely irrelevant. And the way it started, the way it ended, I didn't like it. I'm a cinephile, मुझे world cinema पसंद है, regional cinema पसंद है। पहले इन्होंने बोला this is a story of 30,000 missing girls. Then that story came down to three. So वहीं से छूट जो है वो start हो गया। And the way it projected, yes, there are incidents जो उस टाइप के हुए थे, but ऐसा नहीं था कि 30,000 लोगों को गायब हुआ। And if there are 30,000 women which is being missing, women से should like answer these particular question. But women से was like कि भाई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? Again, there is a new particular story, है ना? That is Kerala Story 2. There is a new film that is coming. And जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड है, they started protesting against this communal propaganda film. That is what they are calling it. Okay. They said that this is a film relevant to love jihad, which is not at all officially confirmed by any government authorities or something. Right? And on the other hand, the ruling government is like BJP की जो government है, that is protecting it, citing that the ground film talks about the ground reality. सो अभी वो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2), राइट, इन दोनों पे डिबेट चालू है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो केरला स्टोरी एक और न्यूज आ रही है। फिर राजस्थान, राजस्थान में कुछ कुछ तो भी हो सकता है। आई मीन राजस्थान के एक एमएलए हैं, ही मेंशन्ड अबाउट लाइक बजट, लाइक बर्थ ऑफ अ बॉय, है ना? कुछ बजट जो है वो जो है बल्क ऑफ अ बॉय, मतलब लड़के पैदा करने जैसा पर्टिकुलर हुआ है कि राजस्थान का जो बजट प्रेजेंट किया गया है वो क्या है, लड़के पैदा होने जैसा है। एंड दैट इज हाउ द पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइक टू, लाइक दिस इज 21st सेंचुरी, यू आर टॉकिंग अबाउट बर्थ ऑफ अ गर्ल, बर्थ ऑफ अ बॉय, बोथ आर इक्वल। बट है प्रॉब्लम है वहां पे थोड़ा सा समस्याएं हैं, राजस्थान है वो, है ना? एंड देन देयर आर सम अदर पॉलिटिकल न्यूज़ जिसमें कुछ-कुछ चीज़ें हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो फॉर्मर जनरल एमएम नरवणे हैं, उन्होंने फिर से ये बात बोली कि चाइना के साथ जो वो है डिस्प्यूट है उसको बॉर्डर का जो पर्टिकुलर अनरिज़ॉल्व्ड बाउंड्री है, वो कहीं न कहीं हमारे टाइज़ को अफेक्ट करती है एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग। तो कल के न्यूज़ में काफ़ी कुछ था, है ना? कांग्रेस ने एक चार्जशीट जो है, पीपल्स चार्जशीट जो है वो रिलीज़ की अगेंस्ट असम गवर्नमेंट एंड सम अदर थिंग। तो कल काफी ज्यादा वाइब्रेंट दिन था। हाय दक्ष। एंड दीज वर द इम्पोर्टेंट न्यूज जो न्यूज में थी। सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर चीज मुझे मिली ट्विटर में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज वेबसाइट्स में, गुड न्यूज वेबसाइट्स में, दैट वाज गलगोटे यूनिवर्सिटी। Everybody was talking about Calcutta University and they were like ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। Nobody was talking about the organizers. They should be responsible कि भाई तुमने चेक क्यों नहीं किया। Right, the organizer should have checked whether they have patent, whether they have developed it, whether they had the like end-to-end particular what we can say.
डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज इन सारी चीजों को. वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन अबाउट द एआई एक्सपर्ट ऑफ यूएस व्हाइट हाउस. राइट. यस, ये थोड़ा सा अलार्मिंग एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि दे वांट इंडिया टू यूज अमेरिकन लाइक फाउंडेशन, अमेरिकन एआईज टू यूज लाइक टू बी यूज्ड इन इंडिया. उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात बोली कि इंडिया को अमेरिकन फाउंडेशन पे बेस्ड एआई बनाना पड़ेगा और अमेरिकन एआई जो है वो यूज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट दे वांट. So people and some experts started like having this debate. And पहले तो तुमने बोला कि हमें ऑयल कहाँ से खरीदना है. दूसरा तुमने बोला कि हमें किससे काम करना है, किससे ट्रेड करना है, नहीं करना है. राइट. अब नाउ यू आर सेइंग कि हम एआई में भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. वी आर गोइंग टू यूज अमेरिकन एआई. सो द एक्सपर्ट्स आर सेइंग इट कि अमेरिकन डोमिनेंस जो है, नाउ दिस इज द हाई टाइम when we should actually challenge American dominance and we should actually deny them. And we have we have enough mind that can actually beat America's AI, but we need to have focus. We need to cut down the VIP culture and that red tape culture. We have to provide more fun to them, and then the world can see India's power to AI. ये एक अच्छी डिबेट कल चल रही थी कि द वे थिंग्स आर हैपनिंग, क्या इंडिया को प्रॉपरली जो एआई है उसमें एक प्रॉपर थॉट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर वर्क कल्चर देने की स्टार्टिंग बहुत जल्दी कर देनी चाहिए. Because the way AI impact happened, like Summit happened, on the very first day, Modi ji arrived without any plan, and there were like 6.5 hours of blockage on that particular summit. People were outside the tent, people were outside the what we can say arena just because of security protocol. लोगों का ये मानना है कि अगर हमें एआई डेवलप करना है इंडिया में वेरी प्रॉपरली, तो हमें वो रेड टेप, राइट, वो वीआईपी कल्चर, इन सब को छोड़ के प्रॉपर फंडिंग एंड प्रॉपर इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी. देयर ऐसा नहीं है कि सब कुछ है इनफैक्ट समिट में गलत ही हुआ है. राइट. देयर आर गुड थिंग्स दैट हैपन. वन ऑफ माय फ्रेंड विजिटेड देयर, तो मैंने पूछा उससे, तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारा पोटेंशियल देखने को मिलता था. there's a huge potential in the Indian aspect. People have started talking about different origins of AI, different applications of AI. There are people who are having gadgets जो real time में language translation करता है. Then he says कि there is a gadget that real time में आपके stress relief, सॉरी स्ट्रेस, हार्मोनल लेवल, बीपी, शुगर, इन सारी चीजों को वो करता है. डाइट मेजर करता है. यस, कैलोरीज एंड अदर थिंग. सो ये एक रियल टाइम में एआई के साथ हो रहा है. सो नॉट ओनली मेडिकल, नॉट ओनली technical, not only other thing, there are huge number of impact, huge number of application that we can actually draw from AI. तो एआई में बहुत लंबा चौड़ा पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल लूज होता है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से, दैट इज रेड टेप कल्चर एंड वीआईपी कल्चर. कहीं ना कहीं यही वो पर्टिकुलर चीज है जो इंडिया को रोक के रखे हुए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एआई इम्पैक्ट समिट दैट इज देयर, right? It has a good output, and we get tons of different what we can say AI models very soon from Indian side. So this was yesterday's major update. चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ लाइक इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे पास क्लैट को लेके इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग इज SIR. किसकी बात करेंगे हम? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. Remember from last year it's a news. From I think we started this particular newspaper analysis from January or December end, and I don't even remember the day when we didn't talk about the SIR. You remember any day? Like I don't think कि मुझे याद है कुछ. So SIR अभी चल रहा है. There are like 12 states or union territories where there is still SIR is going on. There is a final list to be proposed, like electoral roll, right? And then suddenly Election Commission of India came out of nowhere and they said ki, okay, after a huge success of this particular SIR in 12 states and UT, we are going to conduct the new SIR from April 2026 in 22 states and union territories. Yes, प्रॉब्लम क्या है मैं वो बताता हूँ. इसमें
Come on, you have conducted it in the Bihar, you have conducted it in the 12 different states and union territories, and you are aware about the process. We have read about the process. अभी जो मेन चीज कल निकल के आई, मैंने कल एक एडिटोरियल पढ़ा बीबीसी हिंदी में, एंड दे वर लाइक कि दिस पर्टिकुलर एसआईआर एक्सरसाइज इज ओवरलैपिंग विद द census 2027. Yes, the first phase of house listing, that is also start from supposed to start from the April 2026, and the SIR is also uh, supposed to start with this. Now, so Election Commission of India, the Registrar General of India, and Census Authority, they all are supposed to have a coordination before गेटिंग इनटू दिस. तो ओवरऑल फैशन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप एसआईआर कंडक्ट कराएंगे तो सेंसस अथॉरिटीज जो है उसमें एक मैन पावर लगेगी, एसआईआर के लिए एक मैन पावर लगेगी. सो इज इट गोइंग टू बी एफिशिएंट, इज इट गोइंग टू बी प्रॉपर और नॉट? तो अगर मैं बात करूं तो द पोल बॉडीज चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन स्टेट्स एंड यूनियन complete the paperwork for the special intensive revision, right? EC talks with census authority to using the resources in the staged manner. So उनका ये कहना है कि हम यूज करेंगे सेंसस अथॉरिटीज को टू यूटिलाइज द वर्कफोर्स ऑन द ग्राउंड विद द स्टेज्ड मैनर, राइट? सो उनका ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज हम हेल्प में ले सकते हैं. बट experts की ये कहना है कि the way we are using digital, like we are conducting a digital census this time, uh, uh, and SIR is also there. So people who are like old age, who are having old documents, how that is going to be digitalized and how SIR authorities are going to use that data with the help with election census authorities. तो still अभी तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो वो क्वेश्चंस जो है वो सिंपल है कि डिजिटल डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा सेंसस में, हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट, what kind of expert, what kind of help they are going to seek from the census authorities, and how they are going to manage it. So there are tons of things to discuss. Let's hope for the best they find out something and they get into this. So अभी तक जो हमारे पास वो था, राइट, जो सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर था, that was in Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Uttar Pradesh, Puducherry, Andaman Nicobar, Chhattisgarh, Goa, Lakshadweep, Madhya Pradesh, and Rajasthan. So second phase में these were the states and union territories. There were 12 states and union territories which was there, और वहाँ के एसआईआर कंप्लीट होंगे. 22 रिमेनिंग स्टेट्स में अगर हम बात करें, सो आंध्रा, अरुणाचल, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन-दीव, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana, Uttarakhand. They have named all 22 states that is going to be there in the next phase of SIR. तो SIR वापस आ गया है बड़े लेवल पे, that is going to be conducted in 22 states. अब मैं बात कर लेता हूँ जो उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स जारी किए उसकी बात करते हैं. उन्होंने बोला है the exercise is aimed to update the voter list by verifying the existing entries, removing the deceased or duplicate voters, adding a new eligible citizens as voters. Right? उन्होंने बोल दिया कि the we are directing the chief electoral officers, the PLOs, for the mapping of current data of SIR from the last SIR and the remaining data to be updated. So this particular new SIR will actually cover 22 states and union territories, which is like 17 states and 5 UTs. So that is the divide, जिसके कारण ये चीजें होंगी. And that is the third phase of SIR, जो start होने वाला है April 2026 से. So this was SIR for you. अब आगे बात कर लेते हैं. So India sees a future, not fear in AI, says Prime Minister at the plenary session of the summit. So हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधा कहते हैं कि हाँ, इंडिया जो है फ्यूचर देख रहा है, डर नहीं देख रहा है एआई में. एंड उनका एक विजन क्लियर है कि भाई साहब, जो मेजर क्वेश्चन अभी एआई में उठते हैं, है ना, आई थिंक दिस पर्टिकुलर summit was having some particular thing very, very, very positive. First was a legal framework.
We don't have any uh, convention, international convention, or any international or national legal framework to deal with the AI generated content or AI. हमने पहले भी बात की है इस चीज पे, and this was the very first time when people actually talked about the ethical use of AI and legal framework and some other particular thing. सो जो भी पर्टिकुलर इन्होंने वो किया हुआ है, जो भी चीजें दी हैं, जो भी डिस्कशन इन्होंने वो किया है, स्पार्क किया है, दैट इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी था। और इसके बाद से आई थिंक पीपल माइट हैव started discussing about it, that we need an international framework because there is मैं बताता हूँ AI के डेवलपमेंट में the first thing we need is the foundation model. So we code it, we found it, we properly make it so that it can access the data around the world. And after accessing those data, it can answer the question or it can create things accordingly the way people are instructing that AI. So for now, AI में जो dominance देखने को मिलता है, वो USA का देखने को मिलता है, चाइना का देखने को मिलता है, राइट। एंड इसके बाद जो छोटी मोटी कंट्रीज जो आती हैं उसमें फ्रांस आ जाता है, and South Korea आ जाता है, Japan आ जाता है. We are not seeing much of the countries like जो third world nations हैं या दूसरी चीजें हैं, they are not part of this particular race. ऐसा लगता है. सो अगर वो पर्टिकुलर चीजें सेट होती हैं, अगर ये इनके फाउंडेशन मॉडल पे हम एआई को पॉजिटिवली फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एड, सोशल एम्पावरमेंट, बाकी सारी चीजों में यूज करना चाहते हैं, एंड वी आर यूजिंग देयर फाउंडेशन मॉडल, सो वी शुड हैव अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसके बेसिस पे एआई गवर्न हो. दिस समिट टॉक अबाउट इट एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होने के लिए या जो डिबेट में होनी चाहिए थी, एंड दे एक्चुअली स्पार्क द डिबेट वेरी प्रॉपरली. सेकंड थिंग जो मोदी जी ने बोला, इन जनरल आई डोंट एग्री विथ एनी एब्रिविएशन, जो और ऊपर से मोदी जी के जो एब्रिविएशन होते हैं वो अलग ही हो जाते हैं, बट ही मेंशन्ड मानव. सो उन्होंने सीधे तौर पे जो मानव को फुल फॉर्म दिया, दैट वाज मोरल एंड एथिकल सिस्टम, दैट इज एम, राइट. Second one is accountable governance. Third one is national data sovereignty. Fourth one is accessible and inclusive AI. And the fifth one is valid and legitimate use. So overall fashion में अगर हम मानव टर्म जो कॉइन किया है मोदी जी ने अबाउट एआई, उसको देखें तो दिस एक्चुअली हैव ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग जो इंक्लूजन में होना चाहिए. मोरल एंड एथिकल सिस्टम. सो जो फेक्स हैं जो नेगेटिव पीआर करने के लिए या लाइक जो वीडियोस में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, लोगों की इमेज में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, किसी का एआई के थ्रू बनाया गया गलत फोटो, न्यूज, बाकी सारी चीजें हैं, तो एथिकल एंड मोरल यूज. सेकेंड उन्होंने बोला अकाउंटेबल गवर्नेंस. तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होगा, एक कन्वेंशन होगा, तो हर एक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होगी इस चीज के लिए. सो अकाउंटेबल गवर्नेंस. नेशनल डेटा सॉवरेनिटी. हमारे ऑपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी है, उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी अपने पार्लियामेंट में कि भाई साहब एआई सिर्फ डेटा पे चलता है, एआई रन्स ऑन द डेटा, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट डेटा प्रोवाइडर. दैट इज नॉट ओनली राहुल गांधी सेइंग, सैम ऑल्टमैन इज सेइंग, satya nadella is saying, right, and there are tons of different people who are saying India is one of the largest data provider. So when they are saying national data sovereignty, that clearly means कि हमारा जो डेटा है, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, वो नेशनल लेवल पे बेटर होगी, बाकी लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए. सो एआई का यूज करके जो नेशनल डेटा सोवरेनिटी है उस पर डिबेट होनी चाहिए. एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, सो दैट लाइक जैसे इंटरनेट फॉर ऑल है तो एआई फॉर ऑल उसको मान सकते हो तुम, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने वो किया था. लास्ट वन इज वैलिड एंड लेजिटिमेट यूज. हम उसका वैलिड एंड लेजिटिमेट यूज करें. सो यू माइट यूज इन द एजुकेशन, यू माइट यूज इन द research, you might use in the medical, health, and some other particular research and some other particular fields. Unethical use और बाकी सारी चीजें जो है वो बंद होनी चाहिए. तो though we had faced some backlash from the international media, thanks to our local leadership and thanks to our bad execution of that particular first 2 3 days of the AI summit.
Hmm. The debate, the importance of India in the AI, ये एक बहुत properly discussed topic रहा है AI में, so that is something that is good, right? तो AI impact summit में जो चीजें हुई, उसके बाद काफी चीजें निकल के आई, लाइक स्पेशली जो ये टर्म है, uh, इस पे अच्छा खासा डिबेट होगा, दैट इज डेटा सॉवरेनिटी, राइट? एंड जो वो आगे भी उन्होंने बोला, दैट इज डिजिटल गवर्नेंस, कि एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता। यस यस दक्ष, वी गॉट इनवाइट फॉर द पैक सिलिका टू। सो ओवरऑल फैक्शन में मतलब ग्लोबल साउथ में इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट पावर एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर टू होल्ड दिस एआई इम्पैक्ट समिट। स्विट्जरलैंड जो है वो नेक्स्ट एआई इम्पैक्ट समिट नेक्स्ट ईयर में होल्ड करने वाला है, होस्ट करने वाला है। बट फॉर नाउ वी बिकम द वन जिन्होंने एक एथिकल एआई रेगुलेशन कन्वेंशन या लीगल फ्रेमवर्क की बात की। We are the one who actually talk about the data sovereignty of any nation. Then we are the one which is actually talking about the digital constitutionalism. Yes, we are talking about the digital constitutionalism कि दुनिया भर में एआई के कारण किसी की भी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, इनका वॉल्यूशन ना हो, इसलिए सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो देर आर ह्यूज टर्म्स, भारी भारी वह शब्द जो है वो यूज किए गए हैं, एंड दे ऑल वर नेसेसरी, दे ऑल वर इम्पॉर्टेंट। So, it's funny that we can make, actually we can make funs of tons of fun about the AI Impact Summit at its beginning, especially Calcutta University का dog, है ना? But जब आप धीरे धीरे करके conclude करते हो, तो you see a very bright part कि भाई लोग actually started talking about the AI and its like very proper use. So yes, it's not at all like loss वाला case, it's a win-win situation. हाँ, हर जगह पे there are like people like Calcutta University and उनके बनाए हुए थर्माकोल के पेपर, वो प्लेन, and their dogs, their soccer drone, something like this. तो वो हर जगह होते हैं, but yes, it was not a complete failure. वहाँ पे मैंने, I told you, one of my friend is there, and उसने बताया कि it's not at all, the debate and the discussion जो हो रहा है वो बहुत proper, बहुत अच्छे से हो रहा है। So that is what AI Impact Summit। एंड उसके बाद बात करते हैं भाई साहब, former Britain Duke Andrew, right? He was arrested, later on released with the collection of Epstein. टेक्निकली उनको ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है उसके टाइटल से पहले ही रिलीज किया जा चुका है। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। बट ओवरऑल फैशन में अगर उनके बच्चों को, चार्ल्स के बच्चों को, इन सबको लाइंड अप किया है, तो ही माइट बी इन द एट्थ वन टू बी a सक्सेसर ऑफ द किंग चार्ल्स। यस। सो क्या है कहानी, व्हाई ही गॉट अरेस्टेड, हाउ द थिंग्स आर गेटिंग क्रिटिकल। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके न्यूज को वो कर देता हूँ। He was arrested by the British police on the like yesterday, and it was his 66th birthday. He was detained on the suspicion of misconduct in the public office, an offence that carries a maximum sentence of lifetime imprisonment. So ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा बढ़ेगा ड्यूक ऑफ यॉर्क। सो थोड़ा सा चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। For now, अगर मैं बात करूं तो yesterday on the 19th of Feb he was arrested and he was released 11 hours later, right? And he was questioned in the Ashland police station, and he was released under the investigation on Tuesday evening, meaning that the probe is ongoing and charge may still be filled. तो भाई साहब अरेस्ट हुए, भाई साहब को बेल भी मिल गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। एलिगेशंस जो है वो बहुत critical है। The investigation focused on whether the NU improperly shared a confidential government document to Jeffrey Epstein while serving as UK's special representative for international trade and investment, that is trade envoy, between 2001 to 2011. What exactly happened? अगर हम थोड़ी सी बात करें, एंड्रूज का नाम आया कहाँ से, तो ओवरऑल फैशन में एंड्रूज का नाम तब आया जब जेफरी एप्स्टीन की एक विक्टिम ने, है ना, एक अमेरिकन वुमन है, दैट इज वर्जीनिया जेरेफ।
जेफरी, दैट इज द नेम। उन्होंने बताया कि शी वाज influenced and she was what we can say uh, casted, and she was under the pressure of a Jeffrey Epstein and जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, फॉर्मर गर्लफ्रेंड, दैट इज मिस मैक्सवेल। उन्होंने allegedly उनको ट्रैफिक किया एप्स्टीन आइलैंड में when she was just 17, right? And she was what we can say repeatedly forced to have sexual intercourse with the Duke of York, that is Mr. Mountbatten Benson, and she was just 70. तो उसके बाद उनको टाइटल से भी हटाया गया, एंड देन debate start हुई कि if this was something was the case, so he might have shared the important and secret data, the policy data to Jeffrey Epstein on the international trade, because he was the representative of the trade involved, the international trade and investment, uh, UK special representative for the international trade and investment in USA. So he might have shared the important data with the Jeffrey Epstein, जिसके बेसिस पे उसने उनको ब्लैकमेल किया हो या पॉलिसी चेंजेस कराए हैं। सो इट्स नॉट ओनली दिस, वो ऑलरेडी उस मिसकंडक्ट या उस पर्टिकुलर एलिगेशन के लिए उसको निकाला जा चुका है, बट हाँ, द वे ही वाज अरेस्टेड फॉर द डेटा ब्रीच, ये हो सकता है कि आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो। अब ओवरऑल फैशन में जो एप्स्टीन फाइल के एविडेंस है उसकी अगर बात करें, तो the arrest followed the January 26th release of millions of documents by the US Justice Department. These files reportedly includes emails from an account labeled as the Duke, forwarding official trade mission report and a confidential brief on investment in Afghanistan to Epstein. They also updated photograph appearing to show Andrew like in a compromising position, including where he is cursed with the woman on the floor. तो फैशन में emails हैं जिसमें the Duke is sharing important and what we can say sensitive data on investment, and there are photographs जिसमें ये compromising position में दिखते हैं। तो काफी सारे allegation हैं, these are serious allegation for anyone who belong to a royal family। तो अरेस्ट जो है वो तो है ही है। देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सेज जो आए हैं अलग अलग उससे। अगर मैं किंग चार्ल्स थर्ड की बात करूं, जो करंट किंग है यूनाइटेड किंगडम के, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है एक्सप्रेसिंग द डीपेस्ट कंसर्न एंड अफर्मिंग दैट द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, signaling the royal family's cooperation with the authorities। अब टाइटल्स की बात करें तो एंड्रू वॉज स्ट्रिप्ड विद द टाइटल ऑफ प्रिंस एंड ड्यूक ऑफ यॉर्क, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, लास्ट ईयर ही अक्टूबर 2025 में। एंड जो वो है क्या कहना चाहिए, जो लड़की थी जिसके साथ ये गलत हुआ था, शी वाज 17 व्हेन दिस हैपेंड, शी वाज सपोज्ड टू पुट मोर रेवलेशन, बट उसके पहले उनका डेथ हो गया था। तो उसके बाद इनके टाइटल्स हटा दिए गए थे, एंड दे आर गोइंग टू बी अ ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन ऑन बोथ द थिंग्स, ऐसा मानना है। सो पुलिस आल्सो इन्वेस्टिगेटेड अदर फिगर्स नेम्ड इन द फाइल, इंक्लूडिंग फॉर्मर यूके एम्बेसडर पीटर मेंडलसन, for the similar misconduct and allegation, राइट। तो प्रिंस एंड्रू जो है उन्होंने सीधे तौर पे एलिगेशन से डिनाई किया, बट फाइल्स आर सेइंग समथिंग एल्स। सो ये जो है ये ब्रिटेन में चल रहा है भाई साहब। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस जेफरी एप्स्टीन गाय, आई मीन ये ना सभी के लिए पेन है भाई साहब। ओके, तो ये थी एप्स्टीन कहानी। ओके, गलगोटिया जरूर। समाजवादी पार्टी डिमांड्स इन्वेस्टिगेशन ऑन द रोबोट फियास्को, एंड हुआ भी है ना। हाँ, मतलब द थिंग इज कि बड़े लेवल पे बेइज्जती हुई है। एंड हमारा जो नेशनल टीवी है दूरदर्शन, उसने भी शेयर कर दिया था। अश्विनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर, उनने भी शेयर कर दिया था। फिर चाइना की तरफ से उसका क्लेरिफिकेशन आया कि भाई ये हमारे $2800 मिल जाता है। आपने तो कलर तक चेंज नहीं किया, नाम भी चेंज नहीं किया, वो मतलब जो प्रिंटेड है वो भी वही डला हुआ, आपने बस वहां जाके बता दिया कि दिस इज ऑलराइट। तो आई थिंक होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने। ठीक है।
सो ये एक पर्टिकुलर चीज थी जो चल रही थी। एंड हमारे जो असम के सीएम है हेमंता बिश्वा सर, क्या कह रहे हो दक्ष? He was the prince, not the politician. Still, much accountability for a country is crazy. I think every person in authority, whether that is politician, whether that is influencer, whether that is royal family, actors, actresses, or any person in authority should be accountable for its doings, whether that is positive or negative. सो अगर एक स्कूल खराब परफॉर्म करता है तो उसमें टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों अकाउंटेबल होने चाहिए। एक कॉलेज गलत परफॉर्म करता है तो जो प्रोफेसर्स हैं जो वीसीज हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। इफ अ गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। एंड अगर रॉयल फैमिली की तरफ से इस टाइप का मिसकंडक्ट होना चाहिए, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, एक स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो सडनली प्रिंसिपल आ जाता है ना सबके सामने माइक लेके कि देखो मेरी मेहनत से कितना अच्छा हो गया। टीचर्स आ जाते हैं कि हाँ इसको, ये जो टॉपर है इसको मैंने पढ़ाया था, राइट? सो जब आप किसी की सक्सेस का क्रेडिट ले सकते हो तो इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू आर द पर्सन इन अथॉरिटी, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। चलो, जोक्स अपार्ट, मतलब नॉट जोक्स अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स डिस्कस अनदर नॉन इम्पॉर्टेंट डिबेट रेज्ड बाय द असम सीएम। उनका कहना है कि Assami people will get minority tag आफ्टर 2027 सेंसस। उनका ये मानना है कि भैया जो असामी लोग हैं असम में, दे आर गोइंग टू गेट अ माइनॉरिटी टैग, राइट, आफ्टर 2027 सेंसस, क्योंकि वो नंबर्स में कम है। एंड देयर आर अ स्पेसिफिक रिलीजन जो डोमिनेट कर रहा है, तो वो जो है वो थोड़ा सा उनको माइनॉरिटी में ले आएगा। Hmm. The thing is, they sparked a demographic debate कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, है ना? द थिंग इज, असम की पॉपुलेशन में देर आर 34% पीपल which are Muslims, right? And out of those Muslims, there are people who belongs to India, then there are people who belongs to Bangladesh who are an immigrant, which are very less in numbers. And then there are Bodos, Assamese, Gorkhas, Nepalis, some other one. They all carries an like identity of Assam, क्योंकि वहाँ पे local population domination है। वहाँ पे locally ये particular population जो है वहाँ से culture को क्या करती है, what we can say, belong करती है। बट दिस डिबेट कि 2027 के उसमें सेंसस के बाद ये चीजें हो जाएंगी, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट? एंड उनका ये मानना है कि 2041 तक हिंदूज एंड मुस्लिम पॉपुलेशन आर गोइंग टू इक्वल। दिस इज अ ह्यूज डिबेट दैट इज गोइंग ऑन नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम लास्ट टन्स ऑफ इयर्स। और व्हाट्सएप पे तो ऐसे भर भर के आता है। So they talk about how the population growth of Muslims and Hindus are there, how they are comparing, and then how they are going to dominate। मैंने ये सारा डेटा जो है वो देखा हुआ है, मैंने पीआरसीसीआर पीआरसी और बाकी जगहों पे वो भी किया है, वेरीफाई भी किया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, ठीक है, पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, चीजें हैं, तो लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से काम हो सकता है। यस्टरडे ड्यू टू नो सेशन वाज टॉपिक लेफ्ट, बट इट टेकन, इट वाज अबाउट द फाइव। ओके दक्ष, उसकी बात कर लेंगे, रुक जाओ, है ना? सो ही, देयर इज अ पॉलिटिकल स्टांस। ये ऐसा नहीं है कि ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टांस, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा डिबेट नहीं, डिस्कशन में नहीं लाएंगे। नाउ, प्रियंका रिलीजेस पीपल्स चार्ज शीट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन द पोल बाउंड असम। सो देयर इज अ 20 पॉइंट डॉक्यूमेंट जो कि कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया है अगेंस्ट दी हेमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट, indulging the large scale corruption, lands of indigenous people to corporate house after like getting bribes and some other particular thing। तो काफी चीजें जो है उसमें उन्होंने मेंशन की। सो अगर मैं ओवरऑल फैशन में छोटा छोटा वो करूँ तो कांग्रेस के जो रिलीज है पीपल चार्जशीट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग लुक्ड एज द बैड डूइंग ऑफ द बीजेपी।
हेमंता विश्व शर्मा राइट, उनका जो स्टेटमेंट है कि द आसामीज आर गोइंग टू बी इन माइनॉरिटीज, उसको भी कल इनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, सेइंग कि दिस इज समथिंग जो कि गलत है, राइट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड इफ यू आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, give a proper data and documentation on the basis of which you are saying this. The charge sheet also sparked the debate about three, four more things. उन्होंने सीधे तौर पे असम अकॉर्ड की बात की जो 1985 का था, कि जो कल्चरल सिमिलरिटीज एंड कल्चरल वो है डोमिनेंस है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की, एनआरसी अपडेट की बात की, एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है उस पर भी डिबेट किया। सो ओवरऑल फैशन में असम के इलेक्शन में काफी ज्यादा डिबेट्स देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला मेरे को लग रहा है। एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट हु इज गोइंग टू विन, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल मैच। लास्ट बॉल तक हम नहीं कह सकते। ठीक है। सो ये था। देन रूलिंग फ्रंट ऑपोजिशन ऑफ यूनाइटिंग अगेंस्ट द केरला स्टोरी टू। ओके। सो जो एलडीएफ एंड यूडीएफ है ना, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दे आर अगेंस्ट दिस फिल्म दैट इज केरला स्टोरी टू, अपन इसको केएस टू कह देते हैं। बीजेपी इज सपोर्टिंग केएस टू, राइट। This film deals about what we can say, love jihad. I'm not sure how this particular thing is there supposed. मतलब this term love jihad is used by those people जिनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी लगभग नेग्लिजिबल है। आई मीन थिंक अबाउट इट, मोदी जी ने कभी ऐसी कोई बात डायरेक्टली नहीं करी, बड़े लीडर्स कभी ऐसी बात डायरेक्टली नहीं करते। हाँ, जो छोटे भैया नेता होते हैं, छोटे छोटे लोग जिनको न्यूज में आने का शौक है, जो न्यूज में आना चाहते हैं, दे मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि देयर इज अ लव जिहाद, where Muslim men becomes a Hindu, get a Hindu identity, then they get the Hindu girl trapped in their love, एंड देन उसके बाद वो उससे शादी करके उसे मुस्लिम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड जो केरला स्टोरी है वो उसी बारे में बात करती है, राइट। हाँ। सो पीपल का लोगों का ये मानना है कि दिस पर्टिकुलर एजेंडा इज अ राइट विंग एजेंडा which fits in the political aspect of what we can say BJP and its alliance party. तो सीधे तौर पे उनका द फ्रंट इज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, while the BJP is saying this is a reality. हाँ, उनका सीधा ये कहना है कि रियलिटी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर रीजन इसमें हो रहा है, देयर आर सेवरल रीजंस जिसमें ये चीज हो रही है। इन सब के सब टारगेट करते हैं मेजोरिटी हिंदू को। सो मेकर्स जो है वो चाह रहे हैं कि भैया हमें वो मिल जाए, जो अपोजिशन है देवर, लेकिन नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नाउ ओके, इट हैपेंस इन एवरी इलेक्शन बीजेपी। ठीक है। व्हाट आई बिलीव, मतलब बीइंग अ सिनेफाइल, जब मैंने केरला स्टोरी वन देखी थी तब भी मुझे कोई खास वो फिल्म लगी नहीं थी, ना सिनेमा के बेसिस पे, ना एक्टिंग के बेसिस पे, ना टेक्निकल एस्पेक्ट के बेसिस पे। एंड हाँ, अनडाउटली मुझे वो फिल्म गलत लगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग थी 30,000 से लेके और वो 3 तक आ गई, तो वहीं पे वो आ जाता है कि हाँ, इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए झूठी चीजें बोली गई। सेकंड जो है वो इसी तरीके की किसी किसी उसमें वो बात कर रही है, सो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ प्रोपोगेंडा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दिस टर्म लव जिहाद, government is not providing any data relevant to it. It's a good topic to debate. It's a good political issue to raise. But where is the official data कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? And yes, ground realities में अगर मैं बात करूँ तो there are some cases in which this kind of thing actually happened, right? But it was not under any organized, what we can say, syndicate कि जो लड़कों को जो अदर रिलीजन के हैं उनको ट्रेन करी है, you should get involved with the Hindu majority girls, right, and convert them into your religion. So yes, लड़के ऐसी हरकतें आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना, कि किसी के साथ प्रेम में है तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ले, दूसरी चीजें।
बट आई डोंट सी एनी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट दैट इज वर्किंग ऑन इट। एंड ऐसा कोई डेटा अभी या रिपोर्ट अभी तक मुझे ऑफिशियल या अच्छी न्यूज़ वेबसाइट में मिली भी नहीं है कि देयर इज अ थिंग दैट इज लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के फॉर्म में लव जिहाद चल रहा है। एंड देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि जहाँ पे एक इंटरफेथ कपल जो है उनके बीच लड़ाई झगड़े के बाद मर्डर वर्डर हो जाता है, तो उसके लिए अलग चीजें चल जाती हैं कि कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, कोई मेघालय में मिल रहा है। सो ऑल दीज इंसिडेंट, it has nothing to do with religion. Crime is a crime. Yeah, right. We should see a crime as a crime. It has nothing to do with the religious aspect. तो इस तरीके से देखना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे डिबेट चल रही है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्सेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड द वे टू लाइक 2 days बैक सुप्रीम कोर्ट टॉक्स अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लोगों को हार्मोनी एंड हेट स्पीच से बचना चाहिए। ये जो है ये प्रॉब्लम ही है। फिर इसके बाद जो एक्ट्स हैं जो एक फिल्म को गवर्न करते हैं, विद दैट इज सिनेमेटोग्राफर एक्ट या सेंसरशिप या सीबीएफसी, उन पे डिबेट जाएगी कि वेदर दे आर गोइंग टू होल्ड इट और नॉट। ठीक है, सो केरला स्टोरी 2 आ रही है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 4 5 कुछ भी हो, जब तक एग्जाम नहीं निकलता कुछ मत देखो, राइट? जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। व्हेन यू आर इन एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस, जो मन में आए वो देखो। Just make sure to not get what we can say influenced by any of the film without verifying the data. Films can be influential, so data verify karo. SC slam unchecked freebies question appeasement. So वही same चीज है कि भाई साहब there is a state which is having election. Suddenly the ruling government start giving you the money, right, on the basis of certain scheme, and the opposition which is fighting election, they started promising you that we are going to give you huge amount of money on the basis of different scheme, right? Yes. So Supreme Court ka कहना है, भाई, this doesn't look like election or welfare. This freebies is like appeasement of voters. उनका सीधा ये कहना है कि it is not your obligation to spend money to develop infrastructure, road, hospitals, schools, medical colleges. Instead, keep giving scooties, you distribute clothes, food at the time of election. What is happening in the country? That is the statement from the Chief Justice of India, Mr. Justice Suryakant. And ये correct भी है. Nobody in these days, whether that is Congress, BJP, Aam Aadmi Party, left parties, nobody in these days are talking about how we are going to develop the country, how we are going to develop the state. All they are talking about कि हम अगर आए तो हम 10,000 फ्री में देंगे, 5,000 फ्री में देंगे, स्कूटी फ्री में दे देंगे, कपड़े फ्री में दे देंगे, खाने को दे देंगे, घर दे देंगे फ्री में। अब हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट क्या है उसमें? सो यस, ये डिबेट जो है वो डेफिनेटली स्पार्क होनी चाहिए। रिमेंबर दैट बिहार इलेक्शन, इलेक्शन के बीच में 10,000 रुपए अकाउंट में डलवा दिया महिलाओं के। सो द थिंग्स आर प्रॉब्लमेटिक, राइट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये एक्चुअली सुन रहे थे तमिलनाडु का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जो काफी कुछ फ्री में देने की बात करता है। तो चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई दिस डजंट लुक लाइक अ वेलफेयर स्कीम, दिस इज लुकिंग लाइक अ फ्रीबीज एंड अपीजमेंट ऑफ वोटर। देन Mamata Banerjee buying into the IPAC rates side a blunt abuse of power, ED tells to SC. So जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ममता बनर्जी का आईपैक की रेट में सडनली एंटर करना, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड लैपटॉप्स वगैरह लेके जाना, दिस इज अ ब्लंट ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर, जो कि गलत है ना? रिमेम्बर ममता बनर्जी घुस गई थी रेड में और उन्होंने लैपटॉप वैपटॉप डेटा उठा लिया था। हाँ। Okay, so unresolved India-China boundaries affecting ties, says General Narvane. So it's not that the boundaries issues cannot be resolved. It can resolve, but it is to be resolved through the dialogues and discussion. So former General MM Narvane जो है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, बाउंड्रीज को कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो है वो डिफरेंट जगहों पे हमारे टाइज को अफेक्ट करता है। तो इट शुड बी सॉल्व एंड इट शुड बी सॉल्व थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशन। Anil Ambani assured he has no plans to leave India, pledged full cooperation. ये तब हो रहा है जब अनिल अंबानी के ऊपर अप्रोक्सीमेट 40,000 करोड़ के
बैंक फ्रॉड का क्या लगा हुआ है, एलिगेशन लगा हुआ है, राइट। तो उनका ये कहना है कि भाई मैं कहीं देश वेश छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ फुल कोऑपरेशन करूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Bill Gates withdraw from AI Impact Summit keynote address. Why he withdraw? Because on the moral ground, क्योंकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में बहुत ज्यादा आया है, फोटोज आए हैं, एंड आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज एंड ही शुड गिव अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि हाँ भाई गलती हुई है जो भी है। So Switzerland president announces Geneva to host the 2027 AI Impact Summit. अब नेक्स्ट जो समिट आपको देखने को मिलेगी वो जेनेवा में देखने को मिलेगी, right? And he pitched an idea to coming together from all the countries and making AI available for all. ठीक. Controversial movies title withdrawn filmmaker to SC. So Netflix is going to release a film जिसका नाम था घूसखोर पंडित. So people from certain categories, certain caste, they were like कि why the term पंडित and उसको घूसखोर क्यों बताया जा रहा है? इस टाइटल को चेंज करो, it's hurting our sentiment. Um, So filmmakers were like, okay, that's not a big deal. They changed the title, the story is same, and positive. उन्होंने बोला कि हम टाइटल देंगे, but ठीक है. I don't think this was a particular offensive title that is going to affect Brahmin community. Mm. There are Pandit and there is a Goosecore Pandit. So ये अलग अलग चीजें हैं ना. Then जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उनकी तरफ से एक और पर्टिकुलर चीज आई है. यस, कोर्ट का मानना है कि द ejaculation without penetration constitute an attempt to commit rape, not actual rape. So ये दिन भर चलता रहता है. We are still right, don't have a particular information or a proper definition. The modesty of a woman is being compromised, and how it is compromised, and what is supposed to get the definition of a rape, not a rape वाला thing. सो यहाँ पे उन्होंने नया बता दिया कि नहीं भैया ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ये एविडेंस नहीं माना जाएगा. डॉक्टर ने एविडेंस दिया है कि देयर हैज बीन अ पार्शियल पेनिट्रेशन, सो उसमें नहीं होगा. सो ये एक लीगल डिबेट है, कंटिन्यू चलने वाली है. और छत्तीसगढ़ और यूपी का हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दैट इज लाइक in the ranks 1 and 2 when it comes to giving wizard definitions. Okay. There are 2,255 petitions that is challenging the Citizenship Amendment Act as a discriminatory act. Supreme Court will start hearing from May 5th over these petitions. So Citizenship Amendment Act वापस पिक्चर में आने वाला है. So CAA है ना, 2019 में एक ऐसा एक्ट आया था जो आसपास की कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, राइट, यहाँ की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए क्या है, एक एक्ट बनाया गया था जिसे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला गया था. एंड the simple assumption of this act was the minorities are religiously persecuted and India will give them shelter and citizenship. Right. The people and the experts started saying कि why no Muslims is being included, जबकि India is a secular nation and we cannot differentiate between the people based on religion. So government के लिए कहना था कि religiously majority country like Bangladesh, Afghanistan and Pakistan, which are Muslim majority, they cannot have Muslims which are religiously persecuted. So इसलिए हमने नहीं रखा है. So they call it a discrimination. और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है चैलेंज हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाली है. मेक श्योर सीए के जो वो है डेट्स एंड प्रोविजन कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को किस तरीके से चेंज करता है, क्या चीजें आती हैं, उसको एक बार वो कर ले. कांग्रेस कंडेम डेथ थ्रेट टू द राहुल एंड 25 एमपीज. ये एक नया वीडियो आया, मतलब एक चाचा हैं जो खुद को बीजेपी का मेंबर बताते हैं. वी गॉट अ हिज वीडियो विद ओम बिरला ईटिंग फूड एंड ही थ्रेटन राहुल गांधी एंड डिफरेंट एमपीज कि हम घर में घुस के तोड़फोड़ करेंगे और ज्यादा बहसबाजी करी तो गोली मार देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मीन डूड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. मतलब पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट इज फॉर डिबेट.
So if the ruling party and oppositions are having debate and they are countering each other, this is the sign of healthy democracy. You don't need a gun to threaten the opposition. Opposition is equally important as the government. And let them do this. So this man जो है क्या नाम है इसका तेजस्विनी सॉरी तेजस्विनी बोल रहा हूँ अरे यार नाम भूल रहा हूँ उसका चलो नाम छोड़ो है ना वो जो भी है तो उस आदमी ने इस तरीके से बोला उस लोकल कोटा पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया एंड जल्दी वो छूट भी जाएगा है आदत खराब है सो ना दक्ष इंडिया डोंट हैव एनी रिफ्यूजी एक्ट बट इंडिया साइन द ह्यूमन रिफ्यूजी कन्वेंशन ठीक है अच्छा ये वाला आर्टिकल तुम सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग स्लीप deprivation and the toll it takes from your brain and body so as an elder brother as a mentor I suggest you to read this editorial very properly तुम्हारी जनरेशन को इस एडिटोरियल की जरूरत है ठीक है ये पढ़ना जरूर इट्स गोइंग टू हेल्प फ्रॉम वॉशिंगटन टू दिल्ली द शैडो ऑफ एप्सीन ये जो वृंदा कारत हैं इन्होंने बहुत प्रॉपरली ये समझाया है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए इंडिया हाउ इज इंडिया गोइंग टू बी इम्पैक्टेड विद द एप्स्टीन फाइल इंडिया का एंगल हरदीप सिंह पुरी एंड सम अदर नीम्स जो आए हुए हैं अनिल अंबानी मंदा दीपक चोपड़ा मोदी जी सो वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे रीड इट वेरी प्रॉपरली एंड ये जो अपन ने बात की है ना इंडिया के उसमें कंसर्न में जो डेटा प्रोटेक्शन के उसमें है डेटा सॉवरेनिटी के केस में एआई में सो उन्होंने भी प्रिवेसी ट्रांसपेरेंसी की बात की है रीड इट वेरी प्रॉपरली ये भी एक अच्छा एडिटोरियल अगर तुम्हें पढ़ना हो है ना कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है मणिपुर का वॉयलेंस एंड किस तरीके से इल्यूसिव जस्टिस जो है वो अभी दिख रहा है किस तरीके से स्टिल देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम तो ये एक बहुत प्यारा आर्टिकल है मणिपुर की प्रॉब्लम पे टाटा ग्रुप एंड ओपन एआई थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं दे अनाउंसेस अ पैक्ट आफ्टर द एंथ्रोपिक एंड इन्फोसिस so AI Impact Summit is going on. There are people who are using the technology money to develop more models, more capabilities. For example, Tata, Infosys, OpenAI, they could be come together to form a new AI जो आगे चल के काफी जगहों पे हेल्प कर सकता है सो आप मतलब सीन ये है कि जो बेस मॉडल फाउंडेशन मॉडल है ओपन एआई का दे कैन बी यूज्ड बाय द डाटा ग्रुप टू डेवलप अ बेटर वर्जन सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इन्होंने वो किया है साइन किया है तो आगे हमें कुछ नया मिले देसी मिले रेयर अर्थ पैरामेंट परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन is commenced within this year says minister जो वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनिंग है दैट इज जी के रेड्डी जी किशन रेड्डी he said the commencement of a production of rare earth permanent magnet is going to start within this year and we are going to produce like 6,000 metric ton and it's good news that now magnet के केस में ही सही but we are going to have some like self resilienting कि हमें ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा अच्छा ये एक एडिटोरियल मुझे काफी पसंद है हाउ चाइना प्लान्स टू डोमिनेट द ग्लोबल ट्रेड लॉन्ग आफ्टर ट्रम्प लीव द ऑफिस चाइना ने 20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन पे डिबेट्स और डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट रखा है राइट एंड चाचा ट्रम्प तो निकल लेंगे है ना बट उसके बाद भी द चाइना इज गोइंग टू हैव दिस डिबेट हैव दिस पैक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन एंड दे आर गोइंग कीप डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड सो अमेरिकन अभी के टाइम पे जो चीजें सोच रहे हैं कि चाइना को जो China has a very different global ambition and they had huge vision and planning. Somewhere we need that systematic thinking, systematic vision, जो हमें उससे सीखना चाहिए. So ये पढ़ना ये बढ़िया आर्टिकल था. ईरान यूएस boost military posture amid rising tension in the West Asia. ये कुछ दिन पहले लड़ रहे थे ना, है ना?
राइट। अभी के टाइम पे ईरान और रशिया दे हैड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द पर्शियन गल्फ एंड नाउ अमेरिकन्स आर लाइक कि यार इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सो दे अगेन वांटेड टू हैव लाइक अटैक, देन दे वर टॉकिंग, देन नाउ अगेन हैव अटैक। तो ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन इनका चलता रहता है। Iran and Hamas, Israel and Hamas committed atrocities in the Gaza, says UN. Right. So from my side, UN is still alive, guys. Right. ऐसा नहीं है कि ये चला ही गया था, ये जिंदा है अभी। एंड यूएन का ये मानना है कि इजराइल, राइट, एंड हमास दे both conducted and committed atrocities in Gaza and people suffered due to it. काफी जल्दी यूएन की नींद खुली है एंड like I'm proud of United Nation on this. Now USA don't have Henry Kissinger. Okay. So यूएन अभी जिंदा है, यूएन ने अपनी बात रखी कि हाँ यार इसराइल हमास ने कमिटेड एट्रोसिटीज जो है वहां फैलाई हैं, गाजा में लोगों को परेशान किया है। तो इट्स, है ना, दे पब्लिश अ 17 पेज रिपोर्ट एंड दे क्रिटिसाइज द एक्ट ऑफ हमास एंड इसराइल बोथ। वाओ, आई मीन कहाँ थे ये लोग अभी तक। सो चाचा ट्रम्प ने अपनी एक जो यूएन जैसी बोर्ड ऑफ पीस बनाया था उसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई है। चाचा ने बढ़िया फोटो वोटो खींच के सबको वो कर दिया। सो उन्होंने इनॉग्रल मीटिंग में बताया कि $7 बिलियन जो है वो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में 9 कंट्रीज ने प्लेज किए हैं। एंड जो यूएस है उन्होंने 10 बिलियन एडिशनल टू द बोर्ड जो है वो भी प्लेज किया हुआ है। तो चाचा इज ऑन फायर। एंड देयर वाज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, लाइक उसके बाद स्पोर्ट्स का ही रह गया, है ना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्रिकेट में भी अच्छा हो। सो दिस वाज इट फॉर द न्यूज़ टुडे। रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर? जीनियस। चलो, सो आई गॉट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुडे, क्योंकि मैंने बताया ना डेटा बहुत सारा था आज के न्यूज़पेपर में, तो मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, the Election Commission announced the special intensive revision of the voter list remain for the remaining states and union territories, which is expected to begin from. So जो next phase of SIR है, जो states and union territories के लिए डिसाइड किया गया, वो किस पर्टिकुलर उससे स्टार्ट होगा। ऑप्शंस are March 26, April 2026, June 2026, January 2027। बताओ। That is to be start from the April 2026। अपन ने बात की कि अप्रैल 2026 में जो टोटल 22 स्टेट्स एंड यूटीज हैं, सो लाइक 17 स्टेट एंड 5 यूटीज, इनका एसआईआर जो है वो शुरू हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड फेज ऑफ एसआईआर। ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यस्टरडे। ठीक है, वेरी गुड गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, the first phase of population census 2027, the house listing operation is scheduled to begin on. So पहला फेज जो है सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस 2027 का, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, वो कब से शुरू होने वाला है? ऑप्शन आर जनवरी 1 2027, मार्च 15 2026, अप्रैल 1 2026 और जुलाई 1 2026। बताओ। वेरी गुड यश, पढ़ना बच्चे। द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 1 2026। यस, जो फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस है दैट इज सपोज टू बी स्टार्ट फ्रॉम द अप्रैल 1 2026। ध्यान रखना ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। At the AI Impact Summit, Prime Minister Narendra Modi emphasized on which acronym as the way forward for the AI governance.
एआई गवर्नेंस के लिए एक विजन और वे फॉरवर्ड बताने के लिए मोदी जी ने कौन सा एक्रोनिम दिया है? दैट इज ऑप्शंस आर भारत, विकास, डिजिटल या मानव। ये तुम्हें पता है ना? जल्दी से बताओ मुझे। ये इजी है यार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मानव। हाँ हाँ, अपन ने बात की थी किस तरीके से मॉरल एथिकल, राइट, ऐसा वैसा बाकी सारी चीजें बताई उन्होंने। चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The AI Impact Summit speech in the AI Impact Summit, the Prime Minister was live streamed. The speech of Prime Minister was live streamed in how many languages besides English? So AI Impact Summit में जो मोदी जी का स्पीच हुआ था वो कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में लाइव स्ट्रीम हुआ था, इंडियन लैंग्वेजेस में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश? ऑप्शन आर 5, 6, 7, 8। बताओ। वेरी गुड गाइस। आज सारे आंसर्स तुम लोग करेक्ट दे रहे हो। आज अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा या आज काफी अच्छे से वीडियो सुना? द करेक्ट आंसर इज 7। हाँ, जो इनकी स्पीच है वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या की गई, लाइव स्ट्रीम की गई। सो बोल हिंदी में रहते हैं बट लोगों को 7 अलग अलग लैंग्वेज में सुनने का मौका था। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द बिल गेट्स withdraw from delivering a keynote address at the AI Impact Summit due to controversies linked with। बिल गेट्स का जो की नोट एड्रेस जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया एआई इम्पैक्ट समिट से, ड्यू टू विच कंट्रोवर्सी, किस कंट्रोवर्सी में लिंक होने के कारण? ऑप्शंस are Panama Paper Leaks, Jeffrey Epstein Files, Cambridge Analytica या Pegasus Spyware। अरे ये तो इजी है यार। जेफरी एप्स्टीन फाइल या यस और नो? एवरीबॉडी एग्रीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है ये। द ब्रिटेन्स फॉर्मर ड्यूक एंड्रयूज वाज अरेस्टेड ऑन द सस्पिशन ऑफ, है ना, जो फॉर्मर ड्यूक है एंड्रयू, वो ब्रिटेन के, वो किस सस्पिशन में अरेस्ट हुए थे? फाइनेंशियल फ्रॉड, मिसकंडक्ट इन द पब्लिक ऑफिस, टैक्स इवेजन, इनसाइडर ट्रेडिंग। द मिसकंडक्ट इन द पब्लिक ऑफिस, यस, उनका अरेस्ट जो है वो जॉफरी एप्स्टीन फाइल के कारण नहीं हुआ था। याद करो, मैंने बोला था कि वो ड्यूक के थ्रू वो सेंसिटिव ट्रेड इंफॉर्मेशन, राइट, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें लीक हुई थी। सो मिसकंडक्ट इन द पब्लिक ऑफिस when he was in the envoy of trade and investment. Next one, Enforcement Directorate (ED) sought a probe by which agency against the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee? जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, दैट इज प्रवर्तन निदेशालय, इन्होंने ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट किस संस्था की प्रूफ के लिए क्या किया है, डिमांड किया है? ऑप्शंस आर एनआईए, सीबीआई, आईबी, एसएफआई। कम ऑन। ममता बनर्जी ने ईडी की रेड रुकवाई थी, याद करो, आईपैक वाले केस में, राइट, और उन्होंने बोला था ईडी ने कि दिस इज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में बोला है कि वी वांट अ सीबीआई प्रोब अगेंस्ट ममता बनर्जी। राइट, हाँ, वेरी गुड रिच पढ़ना, वेरी गुड बेटा। चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
The Supreme Court criticized states for distributing freebies indiscriminately while hearing the case related to. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है कि मुफ्त की रेवड़ियां जो है बांट रहे हो तुम, किस केस से रिलेटेड सुनवाई करते हुए। ऑप्शंस आर फूड सिक्योरिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024, जीएसटी एक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। बताओ। मेरे को भी लग रहा है चैट डिलेड है। आई डोंट नो व्हाई। मेरा इंटरनेट परफेक्ट है, कल ही भाई साहब ठीक कराया इसको, है ना। कल ही यहाँ पे पूरी वायरिंग और बाकी सारी चीजें चेक करी हैं। एंड आई डोंट नो, मतलब कल का सेशन भी अपन ने इसलिए नहीं किया था बिकॉज रात में हो गई बारिश, और बारिश होने के बाद तुम्हें पता तो है इस देश में क्या होता है। सो हमारा इंटरनेट ही बंद हो गया। खैर, द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसी पे जो है वो हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया स्टेट्स को फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रीबीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। The Congress alleged that AI generated video were taken down under which provision of the IT Act? राइट। सो कांग्रेस का कहना है कि जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं उन्हें हटाया गया है, राइट, किस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंडर, आईटी एक्ट के किस प्रोविजन के अंडर। ऑप्शंस आर सेक्शन 66A 72, 40 section 4366, section 69A and 79(3)(b, section 80 and 81. The correct answer is option number C. Yes. Section 69A and 79(3)(b of IT Act, इनके कारण कांग्रेस के जो पर्टिकुलर वो हैं वीडियोस हैं उनको स्ट्रक डाउन किया गया। Moving on to the next one. According to the Assam Chief Minister Himanta Vishwa Sarma, right, Assamese people will approach minority status after। असमी पीपल्स को कब माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा, ऐसा हेमंत बिश्वा शर्मा को कहना है। ऑप्शंस है 2031 सेंसस, 2041 सेंसस, 2027 सेंसस और द 2026 डीलिमिटेशन। बताओ। ऑब्वियसली सी, दैट इज 2027 व्हाट वी कैन से सेंसस। उन्होंने ये बात बोला कि 2027 सेंसस के बाद जो असामी भी लोग हैं उनका जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा, बिकॉज मुस्लिम पॉपुलेशन विल इंक्रीज। ठीक है। और डीलिमिटेशन का तो काम ही नहीं है रिश्वत ना बच्चे। डीलिमिटेशन इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द सीट इन लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। उसका पॉपुलेशन से लेना देना ऐसा है कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, सर्टेन ईयर के पॉपुलेशन में दे आर गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। According to 2011 census, the Muslim population in Assam was approximately, so according to 2011 census 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी असम क्षेत्र में कितनी थी? 25%, 30%, 34.22%, 40%। बताओ। इस पे भी बात की थी कि शायद 34.22% है, तो मैंने समझाया था कि हाँ देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट, बट ऐसा होना लगभग नामुमकिन होता है। एंड उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन इम्प्रोवाइज होता है, लोगों के जो इंटेलेक्ट है वो इम्प्रोवाइज होते हैं, अल्टीमेटली दे डोंट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कि हमें 40 बच्चे करने हैं, 400 बच्चे करने हैं। दे जस्ट गेट इनटू अ प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर व्हाट वी कैन से लाइफस्टाइल फॉर किड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट समन्ड अनिल अंबानी
Oh, why it's not working? Working. So Anil Ambani in connection with the alleged bank fraud case involving. So अनिल अंबानी को ईडी ने समन किया है कितने के बैंक फ्रॉड के लिए? ऑप्शंस आर 40,000 crore, shipping 5,000 crore, 12,000 crore attachment और 2,000 crores. बताओ. Yes, Daksh, very correct. That is 40,000 crores. 40,000 crore का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का वो चल रहा है. Next one. Sri Lankan Navy arrested how many Tamil Nadu fishermen? Right. Near the Katsaviyu and Nedaviyu. Nadiviyu. Right. Isles. 15, 12, 20, 22. I guess 22 fishermen. I'm not sure तुम्हें पता होगा नहीं होगा. So 22 fishermen जो है Tamil fishermen जो है they are being arrested by Sri Lanka in two different like islets और उनका मानना है कि they are illegally entering like Tamil Nadu's border but छू जाएंगे लोड मतलब. ठीक है. Next question. The Congress releases people's charge sheet against BJP government in which poll bound state. राइट. किस पोल बाउंड स्टेट में कांग्रेस ने पीपल्स चार्जशीट जो है उसको रिलीज किया है? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, असम, केरला, कर्नाटका. बताओ. ये तो तुम्हें पता हो. ऑब्वियसली असम गवर्नमेंट. राइट. हाँ भैया. सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. राइट. एंड दिस वाज टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द हिंदू. एंड आई होप मजा आया हो. मुझे तो आज बड़ा मजा आया. लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम. इस वीक में वैसे भी एक दिन के लिए मैं थोड़ा सा आउट था बट टुडे आई गॉट एक बहुत फ्रेश न्यूज़पेपर मिला है एंड बहुत सारा डिस्कशन डिबेट करने के लिए था और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूज़ थी. फिल्मों का डिस्कशन किया, मीम्स जहाँ बन रहे हैं उनका डिस्कशन किया, कंट्रोवर्सीज का डिस्कशन किया, फिर कुछ लीगल न्यूज़, फिर कुछ दूसरी चीजें. सो यस इट वाज अ गुड न्यूज़. आज के न्यूज़पेपर में मजा आया भाई. एंड आई गेस इट्स बीन लाइक 1.5 hours जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो इट वाज गुड. व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट लाइक से आज के न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा डिफरेंट वाइब्रेंट न्यूज़ थी पढ़ने के लिए. तो मुझे तो मजा आया. खैर ठीक है. आई होप यू एंजॉयड इट टू. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. नो इट्स अ फुल ऑफ एआई स्टिल बट ठीक है. तक कुछ नया तो मिला मतलब कौन. कैन यू इवन इमेजिन द नेक्स्ट एआई समिट बिटवीन एनी यूनिवर्सिटी लाइक गलगोटिया? इमेजिन लाइक 2 साल बाद एक और एआई इम्पैक्ट समिट होगी. क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुत्ते को नहीं बोल पाएंगे? राइट. So that's good. That was good. So this is it from my side for today. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay positive and study well. Life में मस्त रहो and पढ़ाई में व्यस्त रहो. See ya guys. Good day.